I'm audible? Yes, sir. So first question, the time span of Paleogene was approximately fill in the blanks MA. Okay, in whole numbers. MA means million years. So Paleogene means you need to take the difference of the boundary of Paleogene. Okay, means 66 or 65 minus 23 or 22. Okay, plus minus 2 is permissible. It will come around 43 M. Okay, you may expect such type of questions for 1 mark in JAM exam. Okay, or in some match the pair, or maybe in objective type of it. Okay, to tackle such type of question, you need to study time scale thoroughly. Okay, draw time scale on your copy. Okay, then calculate the time span of each and every section. Okay, for Paleozoic, Mesozoic. Okay, then for tertiary, Paleogene, Neogene, like this. Then try to remember the boundary. Okay, important events in the time scale. Okay, like this. Clear? So answer 43 MA. Okay, then next, the Carboniferous system oblique epoch is divided into fill in the blanks major divisions. Major divisions. Okay, you know the Carboniferous is mainly divided into two divisions or two sections. Okay, which one? Mississippian and Pennsylvania. Clear? So you need to put two here, two major divisions, Mississippian and Pennsylvania. Then next, the Great Oxygenation Event, sometimes also called Great Oxygenation Event, oxygen catastrophe, oxygen crisis, oxygen holocaust, or oxygen revolution, was a time period when Earth atmosphere and the shallow ocean first experienced the rise in oxygen, approximately fill in the blanks GA. Okay, during the Paleoproterozoic era. Okay, so you may see hint here. Okay, Paleoproterozoic era is already given. Okay, you need to fill the exact detail. Okay, you need to remember such important events. Oxygenation event means in the atmosphere you will see the slowly rise of oxygen. Okay, due to cyanobacteria, then stromatolites. Okay, like this. So they are living in anaerobic condition. Okay, and producing oxygen and pouring oxygen into the atmosphere. That is the reason during Archean time, okay, we are getting iron oxides. So iron oxides, okay, because we are getting iron oxides of Archean times, okay, or Paleoproterozoic times. So iron oxide means you have oxygen along with the iron. Okay, so that is the evidence. Okay, oxygenation during Paleoproterozoic. Okay, so 2.4 to 2 GA. 2.4 to 2 GA. Okay, GA and BA is same. Okay, GA is also called as billion years ago. 1 billion means 10 to the power how much? 6. 9. 10 to the power 9 years. Okay, Okay. always remember 1 GA or 1 BA means 10 to the power 9 years. Clear? Then next, if mass of the solid soil sample is 2 gram, mass of water is 0.2 gram, and volume of soil is 50 cc. Cc means centimeter cube. Then the dry density of the sample is fill in the blanks in kg per meter cube. Okay, so dry density. Okay, so dry density is equal to ratio of mass of solid, okay, divided by volume.
mass of solid divided by volume. So in the question, solid soil sample 2 gram. Okay, means you have mass of solid. Okay, then mass of water and volume is given. Okay, so we have volume. So no need of mass of water. So leave that portion. Okay, so you have 2 gram and volume in centimeter cube. Okay, so in that case you will get density in gram per centimeter cube. Okay, then we need to convert gram per cc into kg per meter cube. Okay, so mass is 2 gram. 2. Okay, so 2 divided by 50 cc. 50 cc. Okay, so we get 2 by 50 means 0.04. Okay, Meter per centimeter per cube. cc. Gram per centimeter. Then 0.04 multiplied by 1000 will get 40, okay, kg per meter. Okay, Yes, sir. any doubt up to this? No, sir. So next, so on the kyanite selenite joint, the value of component of the system is. सर एकदा फॉर्म्युला सांगा ना मागचा ड्राय डेन्सिटी वाला. Mass of solid upon volume. Okay, so kyanite selenite, this is your kyanite and this is your selenite. Okay, so you need to calculate value of component on this joint. Let's say I'm consider a point here. Okay, you can consider anywhere on this joint. Okay, I'm considering here. So the value of component of the system. Okay, you can calculate orally or you can use phase rule. Okay, what is phase rule? P plus F equals to C plus 2. E plus F is equal to C plus 2. 2. Okay, because here Pressure and temperature is given. E plus F is equal to C plus 2. Okay, so here this is general case actually. Okay, no isobaric condition is mentioned. Okay, so in that case you need to use general phase rule. That is P plus F is equal to C plus 2. Clear? So now you need to calculate the component. Okay, so just calculate the calculate the phase. So one side you have kyanite, one phase, another side you have selenite, means P is equal to 2. Okay, one phase of kyanite and another phase of selenite, so P is equal to 2. Okay, then now degree of freedom. Okay, on any curve or line or joint. Okay, curve or line or joints are univariate. Okay, in that case you need to consider F is equal to 1 on the curve because they are univariate. Okay, so F is equal to 1. Now you can easily calculate. Okay, so 2 plus 1 is equal to C plus 2. Okay, so here 2 get cancelled. We will get C is equal to 1. Only one component. Which one? You know, all these three are the polymorph of Al2SiO5 polymer. aluminosilicate. Okay, so your single phase is actually Al2SiO5. So, Si. Yes. सर जैसे इसमें हम Al2O3 SiO2 ऐसा उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि Al2SiO5 को, तो फिर करेंगे भी तो तीनों के लिए तो सेम ही है ना.
नहीं, जैसे कंपोनेंट हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं ना, तो जैसे मुझे फॉर्मूला पता था तो मैंने इसको दो इसमें डिवाइड कर दिया, Al2O3 सीधा अगर किसी SiO2। दूसरे के साथ हम कंपैरिजन कर रहे होते उस केस में हम कंसिडर कर भी लेते, पर तीनों पॉलीमॉर्फी है, इसी के पॉलीमॉर्फी है ना। फॉर ओके, एग्जांपल यूनिवेलेंट सिस्टम कंसिडर करो H2O के लिए। ओके, सो हाँ, H2O चाहे आप सॉलिड आइस कंसिडर करो या लिक्विड वाटर कंसिडर करो या वेपर फेस कंसिडर तो करो। एक, हाँ, हाँ, एक ही कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। कंपोनेंट ओके, उस केस में एक ही कंसिडर। गॉट इट सर, थैंक यू। सर F1 कसा आला इकडे? बिकॉज कर्व पे पूछा। ओके, ऑलवेज ते रिमेंबर पॉइंटवर f is equal to 1 on the curves always. Okay, then in this field this is bivariant field, here we will get always f is equal to 2, no need of calculation. ठीक है, कर्व पे 1, in this bivariant field you will get 2, and in this equilibrium joint you will see f is equal to 0. This is fixed in every diagram. Okay, just one variation, एक ही variation है, I will tell you in some other example. Okay, we have next example based on such concept. Clear? इतना clear है? यस सर। Or if you go by definition, okay, what is degree of freedom? Means minimum number of independent variable needed to define any phase in a particular diagram. Okay, so why we are considering f is equal to 1 on the curve? Because if you have only pressure or only temperature given, okay, still you can locate the point on the line. See, let's say you are having 0.6 GPa pressure. ओके, टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रेशर है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ओनली यू कैन still draw a straight line up to this line. Okay, and you will get the point of intersection and you can locate the point on the graph. Okay, मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल जरूरी है जिसके वजह से हम ग्राफ पे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, that is f is equal to 1. That is the meaning of f. Okay, degree of freedom. Okay, if you need to locate any point or any phase in this field, let's say in this field, okay, in that case you need minimum two variable. Okay, let's say you have 300 degree Celsius temperature. Okay, so you are drawing one line from 300 degree Celsius, but still you are not able to locate any point here. Okay, now you have 0.6 GA pressure, let's say. So I am drawing another line from 0.6 here. In that case, now you have one point of intersection here. Now you can locate here. So in this field, to locate or to tell any phase, okay, you need minimum two variables. Means one is pressure, another one is temperature. That is the reason we are having degree of freedom 2 here. Hence called as bivariant. कर्व के लिए एक ही जरूरी है, either pressure or a temperature. So in that case, we are considering f is equal to 1, univariant condition. Okay, and in this point, okay, we are already having point of intersection here. So equilibrium, okay, f is equal to 0. Means if अगर यहाँ पे किसी एक भी कंडीशन को आप चेंज करते हो तो आपकी गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ही लॉस्ट हो जाएगा और वो हम कर नहीं सकते। ओके, सो मीन्स हम ना प्रेशर चेंज कर सकते हैं ना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं इस पॉइंट पे, इसलिए एफ को हम वहां पे 0 कंसिडर करेंगे, बिकॉज अदरवाइज इक्विलिब्रियम लॉस्ट हो जाएगा। वी आर नॉट एफ। ओके Sir, यस, so for this particular question, can this question be or a similar question like this can be solved theoretically on the basis if we don't use the like the phase rule, mineralogical phase rule formula. Say I forgot what's the phase rule formula. So in this particular question, since kyanite, sillimanite, and andalusite all can be represented by Al2SiO5 oxide, yeah, Al2SO, sorry. So we can say for any condition, either it is on a univariant point, invariant point, or divariant field, invariant line, we can say the composition component will always be one. yes, definitely.
ओके Okay. मैं सिर्फ आपको दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ. ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. यू कैन सेव योर टाइम. ओके. Sir, I have a question. यस. Sir, in this kind of questions, if we know these basic things like for point it's 0, for line it's 1, and for plane it's 2, Yeah. so can we directly apply our logic there? Yeah, no need to calculate, no That need to use phase rule. Or do we always need to calculate that with the help of formula and all No, this no. stuff? If you have any doubt in your concept, you can cross verify with the help of phase rule. But आपको आंसर सेम ही मिलेगा. ओनली वन वेरिएशन है बाइनरी सिस्टम्स में. मैं आपको बताऊंगा आगे, मैंने प्रॉब्लम रखा है वैसे. ओके. सो फ्रॉम दिस पेपर फेज रूल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फेज रूल पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा. ओके. लीवर रूल पे आए ना आए पर फेज रूल पे क्वेश्चन आता ही है इग्नियस मेथड में. इसलिए मैंने इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे फेज रूल. ओके. और सिंपली हर बार क्या करते हैं बच्चे, बाइनरी करेंगे, टर्नरी करेंगे और यूनिवेरिएंट सिस्टम को छोड़ देते और वही इजी वाला क्वेश्चन को गलत करके आते. लेट्स सी. ओके. नाउ सी हियर. Now tell me, okay, orally, without calculation, degree of freedom at point y. 1. 1. Now we'll calculate this. Okay. Now tell me number of phases. Number of phases. 2 A plus liquid. So first, number of phases. Okay, we have only 2 phases here. Which one? A or A B plus or A plus liquid? A plus liquid, क्योंकि Okay. सॉलिड इसके नीचे अप्लीकेबल ही नहीं है ना Yes. इधर फेज रूल. Okay, we are not considering this A plus B. Okay, because phase rule is not applicable below this line. Okay, below this line phase rule is not applicable. Okay, this is the limitation. Okay, so we need to consider E is equal to one phase is liquid and one phase is A. So we have 2 phases only. Okay, now component, so as we know, it is given binary diagram. Okay, means C is equal to 2. Okay, binary diagram is mentioned. Now we need to use phase rule. P plus F is equal to C plus 1. Okay, in case of standard example like binary and ternary system. Okay, so in that system we are doing experiment in isobaric conditions, means pressure is constant here. So in case of isobaric condition, we need to use reduced phase rule. Okay, P plus F is equal to C plus 1. If standard example nahi hai, general condition is there, in that case you need to use general phase rule. P plus F is equal to C plus 2. Clear? बस कई बार यही पे गलती हो जाती है. तो जैसे इसमें सिर्फ टेम्परेचर ही दिया है तो उससे भी हम कंसीडर कर सकते हैं ना हाँ, कि but- एक ही कंडीशन है. और वैसे बाइनरी डायग्राम मेंशन ही किया है. एंड you know this example. Okay, this is standard example. So now 2 plus F is equal to 2 plus 1. Clear? So 2 get cancelled, we will get F is equal to 1. Clear? So this Sir? limitation you will find only in Mihir Bose. Okay, no other book, किसी और बुक में दिया ही नहीं है. Okay, Sir? that yes. सर फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज सर इसमें आइसोबारिक मेंशन नहीं था बट क्योंकि पेरिटेक्टिक आइसोबारिक में ही हम कंसीडर करते तो हमने मतलब उसे एज्यूम कर लिया है ना. हाँ. And so secondly, so why we have taken phase equals to 2, but because since on like we don't consider phase rule below the peritectic tie line, but at point y the phases that will be crystallizing, that will be A will be crystallizing, B will be crystallizing, and liquid would not have been consumed completely. So why we are not considering phase
not 3 and 2. Although the answer will be 1, and that can be seen from, so since y is on the peritectic tie line, so y will always be 1 since it's on a line. But why not phase here is 3? Here And we are why it is- considering two phases. One is A and another one is liquid. Okay. See, क्या हम कर रहे हैं? हम we are doing laboratory experiment. Okay. तो जब हम नेचुरल कंडीशन लेबोरेटरी में हम नेचुरल कंडीशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ओके. इन मैग्मा वी आर हैविंग सो मेनी कंपोनेंट्स. ओके. इज इट पॉसिबल दैट मैग्मा विल कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट? नो. No, ओके. sir. हम वो कंसीडर कर रहे हैं. सो इन दैट केस वी नीड टू मेक सम assumptions. ओके. So, in phase diagrams, like if we have traveled from any bulk composition जो x के ऊपर होता, the liquid would have followed the liquid line of descent and solid would have followed this vertical line Yes. till it reached the bulk. If we are considering equilibrium crystallization, till it have reached the bulk composition. Yes. So, but then also why, like, I don't get the point why we are not considering the phase equals to 3, but because as soon as it will the liquid will touch the peritectic line, we will start crystallizing for any composition that is equivalent to y. See here. Okay. What different condition we are getting below this line? Okay. Below this line we are only having solid phases. Okay. Yes. Okay. But above we are having solid as well as liquid. Okay. Yes, sir. So you are having some reactions. In that case we need to consider them. But after the complete crystallization, okay, मतलब यहाँ से आपको कोई चेंज मिलने ही वाला नहीं है. No, sir. ओके. तो अब चेंज मिलने ही वाला नहीं है तो उसको क्यों कंसिडर करें? Okay. ओके. हियर वी आर गेटिंग कंप्लीट प्रोडक्ट. अभी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. अब इसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है. ओके. बट here after the crystallization of A is still present along with the magma. So in that case you may see some compositional zoning. Okay. So that is the reason we are considering above the line. Okay. वैसे भी जहाँ 2 सॉलिड प्रेजेंट होते हैं वहाँ फेज रूल एप्लीकेबल नहीं होता है ना, हाँ, फेज रूल अप्लीकेबल ही नहीं है तो फेज रूल यहाँ जहाँ- लगा ही नहीं सकते. क्योंकि यहाँ पे A+ भी दोनों ही सॉलिड है, तो हम वैसा भी कंसिडर कर सकते हैं. यस. क्लियर तान्या? Yes, sir. 47. For a dam site investigation, drilling was carried out up to a depth of 25 meters. The total length of recovered core pieces each over 100 mm add up to 15 meters. The rock quality designation for foundation rock mass is fill in the blanks per. In that case, you need to calculate the RQD or rock quality designation in percentage equal to summation of pieces of core recovered more than 10 centimeter. Okay, more than 10. Again, 10 is not included. Okay, divided by total core length. Okay, total core length multiplied by 100. Okay, so in this given example, the total length recovered core pieces each over 100 mm. 100 mm means your 10 centimeter. Okay, is added up to 15 meter. Add up to 15 meter. Okay, means here we are already having addition. Means this entire sum is given 15 meter. Okay, and the drilling depth, total drilling was carried out up to a depth of 25 meters. So total depth is given. Okay, so simply we need to divide 15 divided by 25, okay, multiplied by 100.
will get आएगा 60%. 60%. Sir, why we took 15 in the numerator? Because total length of recovered core pieces each over 100 mm means each over 10 centimeter is add up to 15 meter. हमको सम दिया है, सम कहाँ पे है? समेशन मींस Sir, एडिशन. add up to 15 meters means what? Are they togetherly making a length of 15 meters? Yeah. Like that? Means let's Okay. say, see, we rarely get entire core. Okay, we'll recover core in some pieces. Let's say this piece is 12 centimeter, this is of 11 centimeter, some maybe of 9 centimeter or less than that. So in that case, we'll leave small pieces. Okay, the pieces which are more than 10 centimeter, okay, we'll add them. Let's say this is 11 centimeter, this is 12 centimeter, and this is 9 centimeter. So we'll add only these two, 11 plus 2. Okay, so 23 upon total length. Okay, upon total length. टोटल लेंथ हमको पता रहेगा बिकॉज ड्रिलिंग हम खुद कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कितनी देर तक हमको ड्रिल करना है या कर रहा है. ओके, सो वी विल ऑलवेज नो द टोटल ड्रिल. Sir, in this formula of RQD, so sum the numerator sum greater than 10 centimeter. Sir, this is for the sum the total sum that is we are considering 15 meter. But this comparison greater than 10 centimeter is for the total length, right? Yeah. But they should make up the sum to 50, greater than 10 centimeter, anything, not for the individual piece. No. Okay, sir. We need to ignore small piece. Okay, sir. Thank you. Sir, what if the no value is greater than 10? Then what should we do? Value is greater than 10. No other value is greater than 10. If no value is greater than 10, then what should we do? Then we'll drill at some other place and try to recover another core to calculate the RQ. Sir, it may ask a tricky question or not, or we won't ask that question. See, we are performing hundreds of drill. Okay, सिर्फ एक drill करके हम कोई conclusion पे नहीं पहुंचते. Okay, not hundred, Sir. thousands of drill. You can say Sir, drilling is on there any your road. possibility? Yes. Sir, is there any possibility that they will be giving the length which are less than 10 centimeter in the question? Yes. Can it happen? And Yeah. so that in that case, then Always. what we will take in the numerator will take 0. No. We just take the total length of those samples, right, which are more than 10 centimeters. Yeah. So if you are not getting any sample like that, so then, and if they frame a question in such a way, 0. 0, right? 0. Means in that case, we'll give a conclusion like rock is so much friable. Okay. So 0 RQD means foundation के लिए कतई उसको हम select नहीं कर सकते. कुछ So, बना. here Pratik said that if that we will only consider those pieces whose length, whose sum, like we are considering this RQD greater than the numerator greater than 10 centimeter for the total length, no? So even if we get smallest or the largest individual piece, it doesn't matter. The sum should be greater than 10 centimeter. No. Yes. Not Sir. some. Yes, Length sir. of Individual each piece should be more individual. than 10 centimeters. Okay, so that's what I asked before, that the individual piece should be greater than 10 centimeter, equal to or greater than 10 centimeter. Yeah. Let's Okay, sir. consider. See, this piece is of 12 centimeter. Okay, this is 8 centimeter. Let's say. Okay, this is 5 centimeter. This is, let's say, 4 centimeter. Okay. Now you are having such core in which only one sample length of only one piece is more than 10 centimeter. Okay, and again you have some length in which no core is recovered. Pura powder hi aa gaya, let's say. So let's say I am considering here. This is actually 12 centimeter length. Okay, where no core is recovered here in that portion. Okay, and your total drill is of, let's say, 100 meter. Consider 100 centimeter. Okay. So
So in that case, you need to add only those pieces which are having some more than 10 centimeters. So only one piece. So 12 centimeter divided by 100. Same. Multiplied by 100. You will get 12%. Like this. If some piece Okay, is sir. having 10 centimeter, in that case, इसको भी ignore करना. Okay. More than 10. More than equal to नहीं बोला. Okay. Okay, sir. The next shear wave velocity in an igneous rock with a density of 2.7 gram per cc and rigidity modulus of 24.3 GPa gigapascal is fill in the blank kilometer per second. Okay. So again, we have one formula. Okay. Shear wave means S wave velocity. Okay. So S wave velocity is equal to under root of mu by rho. mu. Mu means your shear modulus. Sorry, rigidity modulus. Okay. Divided by density. Okay. So now mu is given, density is given. Okay. So I am writing 24.3. Okay, gigapascal. Giga means 10 to the power 9. 10 to the power 9. So I am writing 10 to the power 9. Pascal. Clear? Pascal means kg. बताओ जल्दी जल्दी. Meter per second square. Per meter per second. Correct? Correct. सब रूट में और इन वन रूट. Divided by density. Okay, 2.7 gram per cc. Other units are in kg and meter. Okay, we need to convert here. Okay, so 2.7 multiplied by 1000 to convert this value of gram per cc into kg per meter cube. Okay, so now you have 2700. So 2700. Okay, now it is in kg per meter cube. So I am writing kg per meter cube. Okay, so kg minus. Clear? Yes, sir. kg gaya. Okay, so -1 here and -2 बचेगा. Okay, you will get -2 here, and in the numerator you have per second square. Okay, so if we shift this meter to the numerator, okay, so ये meter square हो जाएगा positive. You can shift here per second square to the denominator. तो यहाँ पे ये positive हो जाएगा. Okay, so square है, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में. Clear? So now, so this 20. Okay, so यहाँ से गया, कितना बचा, 7. ओके, एक जीरो को हम डेसिमल के साथ कैंसिल कर देते. ओके, सो 24.3 इंटू 1/10 यहाँ से ले लिया, बोरो कर लिया, तो ये हो जाएगा 243. ओके, यू विल गेट 10 to the power 6 here in the numerator. ओके, डिवाइडेड बाय 27. रूट के बाहर हमने ला लिया तो हमको क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड. क्लियर? बिकॉज रूट के अंदर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है. क्लियर? नाउ 243 is divisible by 27. Okay, so you'll get 9. एग्जैक्ट आंसर 3 आता है. हाँ. You'll get 9. Okay, you'll get 9 here. So 9 means 3 का square. So you'll get 3 outside the root. 10 to the power 6 means 10 to the power 3 outside. 3 means 30. You'll get 3000 meter per second. Okay, what you need to calculate in kilometer per second. So divide by 1000. Okay, so divide by 1000. Sir, please repeat the last step. Divide by 1000. See, you will get this. Before that. 27 9s are 243. Okay,
So 9 means 3 का square. Okay, so you'll get 3 outside. Okay, and 10 to the power 6 in the root means 10 to the power 3 outside. 10 to the power 3 means 30. So 3000 divided by 1000. Okay, क्योंकि ये मीटर में है. You need to convert meter to kilometer. So divide by 1000. छोटे से बड़ा करेंगे तो डिवाइड, बड़े से छोटा करेंगे तो मल्टीप्लाई. 30. You'll get 3 kilometer per second. Final answer is 3 kilometer per second. सर मैंने 3.0 की थी तो रॉन्ग आया आंसर. करेक्ट आंसर में 2.9 दिया है. मैंने इसका 3 निकाला, फिर 1 डेसिमल था तो 0.0 भी ऐड की तो रॉन्ग आया. रॉन्ग मिला मुझे. पोर्टल की मिस्टेक है. ओके. मैंने 3 पुट किया था, 3.1 पुट किया था, 2.9 पुट किया था. अब उसमें भी आप और 3 भी पुट किया था. अब 3.0 नहीं पुट किया था. तो क्योंकि इसमें 1 डेसिमल बोला था, यानी लिखा है, इसलिए मैंने 0.0. हाँ, फाइनल आंसर में करेक्ट मिलेगा आपको. वहाँ पे बहुत सारा रेंज रहती है. यस सर. सर वही कंफ्यूजन था कि इतू से कैसे हो गया आंसर. यस सर. 3.0 is also correct. पोर्टल पे एक्चुअली मैं मैक्सिमम 5 आंसर डाल सकता हूँ पॉसिबिलिटीज. तो मैं खुद जब कैलकुलेट करता हूँ तो जो जो मेरे कैलकुलेशन में आ सकता है तो वो 1-2 रख देता हूँ, फिर ऊपर के 2 नीचे के 2 ऐसे कर देता हूँ. उससे ज्यादा नहीं रख. पर जब फाइनल आंसर में रेंज गिवन होती है तो 5 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाती है. नेक्स्ट. ओके, नाउ such type of question can be solved with the help of units only. Okay, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये रखा था. ओके, सी इन जाम एग्जाम एक्चुअली इंजीनियरिंग जियोलॉजी पे काफी कम वेटेज होता है. ओके, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे. न्यूमेरिकल में इंजीनियरिंग जियोलॉजी ना के बराबर आती है. ऑब्जेक्टिव में ओनली बेस्ड ऑन डैम और रिजर्वायर पे आपको 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे. पर अभी ये सेक्शनल पेपर है इसलिए उस पर ज्यादा क्वेश्चन बने हैं. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं भी आए हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग में जैम के लिए. ओके, गेट वाला कोई पढ़ रहा है तो उसको तो इस पे ही सबसे ज्यादा आने वाला. हाँ, बट दिस इज इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज हम पढ़ रहे हैं. वी नीड टू डेवलप द लॉजिक. ओके, एक बार आप न्यूमेरिकल का आंसर टाइम पे निकालना कैसे ये सीख गए. अगर आंसर पता है तो मैं क्या, कोई भी निकाल लेगा आंसर. जब आंसर पता नहीं है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कैलकुलेट करना है तो वो एक टास्क है. बिकॉज क्या होता है एग्जाम टाइम में जो फर्स्ट आंसर आपका आएगा आपको उस पर ही 100% कंफर्मेशन होता है कि नहीं हमारा सही है, क्योंकि हमने फर्स्ट सिंगल स्टेप में निकाल लिया, मतलब फर्स्ट कैलकुलेशन में निकाल लिया. हमको लगता ही नहीं कि वो हमने गलत किया है. और ऐसा होता है न्यूमेरिकल में. So during bench blasting in a quarry, 50 kg of an explosive with a yield of 5 megajoule per kg is required to break 100 meter cube of marble. In this case, the energy expended in breaking a unit volume of marble in mega newton per meter square. Okay, so mega newton per meter square में लेके आना. Okay, now see mega, you know mega means 10 to the power 6. Okay, newton means newton kg into meter per second square. kg. Okay, means kg in numerator. Okay, so here we have 50 kg. Okay, here we have mega. You need mega in numerator, means definitely हमको इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा. क्लियर? ये हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया. फार्मूला हमें नहीं मालूम. ठीक है, क्लियर? ओके, Yes sir. so what we are doing, we are multiplying 50. बट सर हम 50 kg को उससे मल्टीप्लाई करें तो kg कैंसिल हो जाएगा ना. 1 kg न्यूमरेटर में 1 kg डिनोमिनेटर में. तो देखो कैसे होता है. ओके, multiplied by 5. Here we are having मेगा. जूल में भी तो केजी है, ये भूल गई है. मैंने आपको बोला था न्यूटन, जूल और पास्कल, इसका पूरा याद करके रखो.
सर जूल नहीं पता था, बाकी सब पता था। Okay, and now you need meter square in the denominator, so definitely 100 meter cube से हमको divide करना पड़ेगा. I am dividing with the help of 100 meter cube. Okay, ये जो सीख गया ना वो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है, Excuse me, sir. आंसर यूनिट से कैसे निकालें? हाँ, Sir, Yes. can I request you something? It is Yes. quite stupid, but can you please explain what is asked in the question? I'm really not getting the question. okay, then. During bench blasting in a quarry, 50 kg of an explosive with a yield of 5 meganewton per kg is required to break 100 meter cube of marble. हम कर क्या रहे हैं, इन पर्टिकुलर माइन में हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं. ओके, तो माइन में जब हमको ब्लास्ट करना है, बिकॉज ड्यू टू प्रेशर जो मटेरियल या जो ओर या कोल जो भी हमको निकालना है वो काफी हार्ड हो जाता है. तो हम डायरेक्ट उसको जेसीबी लगाएंगे तो जेसीबी काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली. ओके, तो हमको उसको क्या करना है, ब्रेक करना होता है, सो दैट वी कैन इजीली pour out the material with the help of JCB. ओके, तो हम ब्लास्टिंग करके उसको वीक बना देते हैं और फिर JCB से एक्सकैवेट कर देते हैं. सो वी आर यूजिंग 50 kg ऑफ एक्सप्लोजिव, है ना, हम बोलते हैं ना आतंकवादी लोग 10 किलो RDX. ओके, सो हियर वी आर यूजिंग 50 kg ऑफ एक्सप्लोजिव. ओके, तो विच इज, तो 50 kg जो है वो इतना अमाउंट ऑफ मेगा जूल पर केजी इफेक्ट इम्पैक्ट डालता है. ओके, और हमको ब्रेक क्या करना है, वी आर ब्रेकिंग मार्बल, इट इज ऑलरेडी हार्ड रॉक. ओके, सो दिस 50 kg of explosive is sufficient to break the 100 meter cube of marble. ऐसा बोला गया. Clear? Now here ये kg and this kg get cancelled. Okay, now we have mega. तो मेगा तो हमको चाहिए, यहाँ न्यूटन चाहिए, यहाँ मीटर स्क्वायर. ओके, जो नहीं चाहिए उसको ब्रेक करेंगे तो क्या बचा, जूल. ओके, so जूल मीन्स kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, जूल मीन्स, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया 250. ओके, डिवाइडेड बाय 100. सो मेगा as it is, joule means kg meter square per second square. Okay, divided by meter cube. Okay, so what we are doing, we need meter square in the denominator. Okay, so हम सिर्फ एक मीटर को कैंसिल कर, we are cancelling only 1 meter. Okay, now we have meter square in the denominator and 1 meter from the numerator. Now we have meter in the numerator. Okay, now if you see carefully, so kg meter per second square is your Newton. Okay, what is 1 Newton? 1 Newton is kg meter per second. Second square है, sorry. kg meter per second square is your value of Newton. So now we are using Newton instead of this kg meter per second. So क्या बन गया, मेगा न्यूटन, okay, per meter square. Okay, now simply यूनिट मिल गया हमको, 100 से डिवाइड कर दो, you'll get 2.5, 1 decimal place. सर त्याचा फॉर्म्युला सांगता एकदा पुन्हा. सर Yes, सर ऐसे क्वेश्चन में जैसे अभी हमने इसको यूनिट से निकाल सकते थे, जो उस मतलब मुझे नहीं ध्यान आया कि इसको यूनिट से भी निकाल सकते हैं. सर अगर हम ऐसे फॉर्मूला में या ऐसे सॉरी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट हमें जैसे दिया है कि 50 है तो वो 5 मेगा जूल पर केजी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला यूज करके कर रहे हैं तब भी हमें यूनिट चेक करनी जरूरी है. मतलब ऐसा हो हाँ. सकता है क्या कि क्वेश्चन में कभी कभी वो उल्टा कर दें, उल्टा फुल्टा कुछ कर दें और यूनिट्स हमारी गलत हो जाए. possible. You need to verify units. Units ही बहुत important. और Because यूनिट sometimes क्या होता है, Yes. you are not able to understand the value. मतलब वैल्यू किस चीज की गिवन है, लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो तब हम यूनिट से ही पहचान सकते हैं कि दिया क्या है.
खास करके आपको डार्सिला के क्वेश्चंस में ऐसे मिलेंगे. In case of Okay, sir. Darcilla, you will see such type of language. Okay, sir. हाँ Maya, what you are saying? फर्स्ट फॉर्म्युला सांगा ना एकदा प्लीज. फॉर्म्युला आहेच नाही, ही जनरल कंडिशन. सर शॉर्ट में रिपीट यूनिटरी मेथड हम बोल सकते हैं. जैसे 2 रुपए का एक चॉकलेट, तो 10 चॉकलेट कितने की? ओके Like this. Okay. ओके So if 50 kg of explosive is okay, जो 5 megajoule per kg का impact डाल सकता है. Okay, and we are breaking 100 meter cube of marble. Okay, so in this case, if the energy expanded in breaking the unit volume of marble, तो एक यूनिट के लिए हमको पूछा गया है. अगर 50 kg, okay, let's say 50 kg of RDX is sufficient to blast the entire 3-floor building. Okay, और बिल्डिंग का वॉल्यूम दिया लाइक 100 मीटर लाइक दिस. तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते. तो हमने क्या किया, वी आर मल्टीप्लाइंग 50 kg विथ 5 मेगाजूल पर kg. ओके, एंड देन 100 से डिवाइड कर. ये हमने कैसे पता किया? फ्रॉम द यूनिट्स, बिकॉज वी नीड मेगा एंड न्यूटन इन न्यूमरेटर एंड मीटर स्क्वायर इन डिनोमिनेटर. तो जो वैल्यू मीटर स्क्वायर में थी वो 100 थी, उसको हमने डिनोमिनेटर में लेके गए, एंड मेगा एंड न्यूटन हमने न्यूमरेटर में रखा. सो एक बार ये जो मेगा जूल पर केजी है उसको हमने मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया, एक बार ये सब क्लीन करके एक बार आप फ्रेश से बताइए ना. सिर्फ यूनिट का पता था, ठीक है. हाँ सर, बस यूनिट में से वो See 50 kg, so I'm using kg here. Then we have 5, okay, megajoule, है ना. So I'm writing capital M for mega. Joule, joule means your kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. meter square per second square. This is your joule divided by kg, and again whole divided by. सर अब आ गया, मैंने जूल का यूनिट ही रॉन्ग लिखा था. So kg get cancelled here, and हमने सिर्फ एक मीटर कैंसिल किया, because we need meter square in the denominator. वो तो दो भी सकते थे, पर एक कैंसिल से हम इसको न्यूटन भी बना सकते थे, इसलिए. सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज न्यूटन, सो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस सर. दिस सर ये कंसेप्ट इज क्वेश्चन सच में जैम के लिए था? नहीं, जैम के लिए नहीं था. मीन्स जो लॉजिक है वो हमको समझना जरूरी है, बिकॉज जैम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे मिनरलॉजी में. ओके, और हर बार आपको फॉर्मूला पता हो. मैं बोलता हूँ 50-50 केस होती है. 50% केस में आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, तो उसका मतलब क्या हो गया? आंसर नहीं निकल पाओगे, ऐसा नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्टिल यू कैन क्रैक 40% क्वेश्चन. 10% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फॉर्मूले के सिवा ऑप्शन नहीं है, बट 5 में से 3 तो आप यूनिट के बेस पे बना सकते, 2 भले ही गलत हो जाए. ओके, सो मैं आपको ये लॉजिक थोड़ा आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला. What we are doing this with the help of this sectional paper, actually we are trying to prepare you for the advanced cases, worst cases actually. ठीक है, अगर एग्जाम आपके फेवर में रहा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, नो इश्यूज. पर हम मान के तो चल नहीं सकते कि हम सब अच्छा ही होगा, और हमारे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं, ऐसा हम मान के चलते हैं. ओके, तो वर्स्ट केसेस में भी थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं, या हम कैसे सोच सकते हैं पैनिक ना होते हुए, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन से प्रिपरेशन करवाते हैं. अब इंजीनियरिंग में जैम के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज तो है नहीं, पर अब सेक्शन है तो उस पर बहुत ज़्यादा डाल भी नहीं सकते थे. तो हमने ये चीज़ें जिससे आपको बाकी सेक्शन के क्वेश्चंस को टैकल करने में प्रैक्टिस हो जाए, वो हमारा मोटो था एक्चुअली. और बहुत ज़्यादा आपको मार्क मिल गए तो ऐसा लगता है पढ़ाई हो गई, इसलिए कम ही मिलते हैं तो और पढ़ने की कोशिश करो. ट्राई टू इम्प्रूव. ओके, लास्ट कोर्स से बेहतर रहे, इतना टारगेट रखो. किसी के आगे नहीं जाना, किसी के पीछे नहीं जाना. ट्राई टू बीट खुद का स्कोर एवरी टाइम. नेक्स्ट, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर in the earth atmosphere
estimated to be about 1.29 multiplied by 10 to the power 4 kilometer cube. We have to completely precipitate and uniformly cover the earth's surface, estimated to be 5.1 into 10 to the power 8 kilometers square. The height of the resulting water column will be. Okay. Question समझा? नहीं भी समझता है तो अगेन सी हियर किलोमीटर क्यूब मींस डेफिनेटली वॉल्यूम की बात हो रही है. ओके एंड किलोमीटर स्क्वायर मींस डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट और थिंकिंग अबाउट एरिया. या यहाँ से हम पता कर सकते. ओके so from kilometer square, meter square, these are the units of area. Okay, so if you are multiplying area with height, so you will get volume. Area into height, the formula for volume, and kilometer cube, meter cube, they are the unit for volume. Okay, so we can compare. So simply height multiplied by, let's say, area is equal to volume हो जाएगा, and we have another volume. So this is h into area is also your volume. This is also volume. We can easily compare two volumes. So h is equal to 1 volume divided by area. तो h मिल जाएगा. हमको height ही पूछी है. Height of the resulting water column. Clear? So I'm using this concept. Clear? So volume is given 1.29. Okay, multiplied by 10 to the power 4. Okay, kilometer cube. Area is given 5.1 multiplied by 10 to the power 8 kilometer square. Okay, so here kilometer square get cancelled, kilometer बच गया. Okay, so now calculate this. 10 to the power 4 in the numerator, 4 गया. Okay, 4 here. Now we have 4 here. Okay, so use your calculator. So you'll get something. So see, there are now 1.29 in the numerator. Okay, now see this. Okay, you need to calculate your answer in centimeter. So means you need to convert this kilometer. So kilometer to meter, 1000 is 10 to the power 3. Now meter to centimeter, 100 is 10 to the power 2. Okay, and in the denominator we have 5.1 multiplied by 10 to the power 4. Okay, तो यहाँ से 4 गया, 3 + 2 5 है. ओके, काट देता हूँ. एक जो 10 बचा इसको डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ यू हैव 12.9 इंस्टेड ऑफ 1.29 डिवाइडेड बाय 5.1. क्लियर? नाउ यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. आपको आंसर मिल जाएगा 2.5. क्लियर? सेंटीमीटर. एक्सक्यूज मी सर. सर Yes. जब हमने कैंसिल कर दिया था 10 to the power 4 तो फिर से वहाँ पे 10 to the power 3 into 10 to the power 2 कहाँ से आया? किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में लाया. किलोमीटर टू मीटर 10 to the power 3, meter to centimeter 10 to the power 2. Okay, so kilometer to centimeter 10 to the power 5. Sir, Yes. sir, before you proceed further, sir, उस phase diagram जो peritectic phase diagram था, sir, उसमें एक sir, can you go back to that question? One second. ये क्लियर है? यहाँ कोई डाउट? ये वाला? Yes, sir. Sir, in this question, sir, हमें एक मिनट.
सर हमें बल्क कॉम्पोजिशन तो मेंशन है नहीं, हम्म, सो सर लेट्स कंसिडर कि y पे हमारा मतलब y के करस्पॉन्डिंगली से x के ऊपर या कहीं पर अगर हमारा बल्क कॉम्पोजिशन है, ऐसे तो हमें दिया नहीं तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, बट स्टिल एट as soon as the liquid line reaches the peritectic tie line, the liquidus line, सर हमारा FO plus SiO2 will start giving us enstatite, क्योंकि हमें y पे पूछ रखा है। हाँ सर मैं यही बोल रही हूँ कि हमने बल्क कॉम्पोजिशन करस्पॉन्डिंगली x के ऊपर कंसीडर कर लिया। So the reaction that will happen will be FO plus SiO2 gives you En, that is enstatite. If we talk about a typical example, that is A plus C gives you B. So sir, at that point our our degree of freedom at the peritectic tie line should be 0. According to F equals to C minus P plus 1, the component will be 2, the phases will be 3 plus 1. And which like sir हम बोलते हैं कि अभी बात कर रहे थे कि A अगर Y के ऊपर है that is A plus liquid है एंड नीचे है तो A plus B है। सर वो ठीक है कि A plus B फील्ड में हमारा ये फेज रूल अप्लाई नहीं होता, बट हमसे Y पे पूछा है, Y एक्चुअली लाइन पे लाई कर रहे हो किसी फील्ड पे नहीं, और कितना बचा मतलब कौन सा फेस कंज्यूम हुआ कौन सा नहीं हुआ, ये तो बल्क कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा जो हमें दिया नहीं हुआ है, और उसको निकालने का तो फिर अलग तरीका होता है कि EN FO या SI में सॉरी FO SI में क्या कंज्यूमर है क्या नहीं है, दोनों साथ में कंज्यूमर है, बट हियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 0 नॉट 1। दैट्स माय पॉइंट सर, अगर आपको समझ में आया तो। हाँ सर बहुत सारा बोल दिया तो मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। तो तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बोल रही हो? नहीं सर, सब एट पॉइंट y सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी शुड बी 0 एंड नॉट 1। 0 होना So phases चाहिए। will be, yes sir, so the phases will be 3. But phases will not be 3 because irrespective of, we are talking about solid, liquid and gas, right? So it doesn't matter There whether है तो it should तीन be नहीं आएगा, दो enstatite ही or आएगा। any other thing. Together they are solid. So phases are just 2. Even if 2 or simultaneous minerals are crystallizing together, they are in solid phase now. So that is one phase and the remaining melt is another phase. So number of phases will always be 2. They cannot be 3. Even though It is n number of binary. minerals are crystallizing through it, right? They all are solid now. See one नहीं thing, I Tanya. yes sir. See, what is phase rule actually? It is Gibbs phase rule. Okay, so that phase rule is a thermodynamic condition. Okay, so dynamic means if something is in continuous change, so in that case you need to consider. Okay, so but below this tie line, okay, below this tie line, okay, only solid phases are existing. Okay, Yes sir. एक बार कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, वहां पे मेल्ट का रोल खत्म हो गया है, तो अब वो डायनामिक स्टेट में नहीं रहा। ओके, तो अब जो Yes चीज sir. डायनामिक स्टेट में नहीं है हम उसके बारे में कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज हमने फेज रूल को जो डिराइव किया है वो ओनली मेटास्टेबल कंडीशंस के लिए डिराइव किया। ओके, इसलिए हमने एजम्पशंस लगाया कि फॉर ओनली सॉलिड फेजेस फेज रूल इज नॉट अप्लीकेबल। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ से बी को रूल्ड आउट कर दिया, ये वाला हम ए नहीं कंसिडर कर रहे, हम वी आर कंसिडरिंग ए फ्रॉम दिस पोर्शन एंड लिक्विड, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस 2। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है ये Sir. गेट 2019 में ही आया है। ओके, Okay sir. ये वेरीफाइड क्वेश्चन है, आंसर की में भी वेरीफाई है, कोई Yes, sir. नहीं सर ऑब्जेक्शन वो नहीं है। नहीं मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब सर मैंने आपको एक इमेज भेजी है व्हाट्सएप पे, आप बाद में या अभी अगर क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो आप उसको देखिए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चीज फिर हाउ कम मतलब मेरा वो चीज गलत है या इट इज नॉट करस्पॉन्डिंग हियर। बाद में करते हैं उसको, ठीक। ओके सर। Now see here. So during rock slide, our 20 kg granite block gets dislodged from the top of a planar hill slope, starts sliding down the slope. The slope angle is 30 degree with the horizontal. After traveling a distance of 40 meter in the same direction on the slope. See, this distance is 40 meter actually. Okay, so this is your height. Okay, now height is always 90 degree with the ground. So now you have this triangle, right angle triangle. Okay, this angle is given 30 degree. Okay,
Now we need to calculate the velocity. For velocity, we have formula v is equal to under root of 2gh. Again, derived formula, potential energy is equal to kinetic energy. इसे हम derive कर सकते हैं. Okay. Now see here. So we need h. Okay, but h is not given. But you can calculate h with the help of this diagram. Okay. So use basic trigonometry. So this is your perpendicular. This is your hypotenuse. Okay. So perpendicular upon hypotenuse. कौन सा रेशियो लगेगा? Perpendicular upon hypotenuse. Sin 30. Okay. Sin 30. So sin angle is 30. So sin 30 is equal to perpendicular. Let's say consider x. Okay. So x divided by 40. Okay. Now sin 30 is value of sin 30. 1 by 2. 1 by 2. So 1 by 2 is equal to x by 40. So 2 20. Okay. So x will become 20. Okay. Now everything is in meter, 40 meter. So it is 20 meter. Now you have height. Okay. So now substitute your values under root of 2 multiplied by g. Okay. We need to use 10 meter per second square gravity. Okay. So 10 multiplied by h 20. So 10 meter per second square and 20 meters. So meter square per second square inside the root. Okay, so outside the root, meter per second. 20 into 10, 200, 200 into 2, 400. Under root of 400 means square root of 20. You will get answer 20 meter per second. Clear? Yes, sir. Okay, this concept is very much important. अब तक सेम फॉर्मूले पे 4 बार क्वेश्चन आ चुके, जैम में से, गेट में भी आते हैं, जैम में भी आते हैं. 4 बार तो जैम नहीं आया है. अभी तक डायरेक्ट आते थे. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट हमको एच निकालना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. क्लियर? Yes, sir. हेलो सर. हाँ, सर सेम क्वेश्चन सर सेम क्वेश्चन अगर फ्री फॉल का होता, अगर वो स्लोप नहीं होता तो फिर आंसर क्या आता सर, या फिर सेम आता है या डिफरेंट आता? फ्री फॉल रहता तो हमको हाइट पता होती थी. ओके, फ्री फॉल के केस में हाँ, हाइट पता है. सपोज 20 दी है. हाँ, तो फिर डायरेक्ट ओके, फॉर्मूला लगाएंगे. फ्री फॉल की हाइट सपोज 20, तो ग्रेविटी तो फिर गिवन है. सेम आंसर आएगा. हाँ, आंसर सेम है. ओके ओके, वैल्यू सेम रही तो आंसर सेम ही है. अगर हाइट वेरी करेगी तो आंसर भी वेरी करेगी. हेलो सर. यस. चैट बॉक्स मध्ये टाक. Now see here. So from the given figure given below depicting a recovered core of a total length 200 centimeter. Okay, so now total length is given. So according to formula, we have total length. Okay, in the denominator. So 200 centimeter. Every value is in centimeter. The RQD we need to calculate. Now diagram is given. See here, 30 centimeter. Okay, more than 10 centimeter. तो use count करेंगे. Plus 16 centimeter. Okay, plus 8 को छोड़ देंगे because it is below 10. Okay, then again 20 centimeter plus 20. Okay, this is no recovery. Okay, हम कोर की लेंथ कंसिडर कर, वी आर कंसिडरिंग कोर लेंथ. ओके, अगर रिकवरी नहीं है तो क्या कंसिडर करेंगे? सो ये छोड़ दो, नो रिकवरी. कैलकुलेट दिस, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट योर आंसर.
So 30 plus 20, 50, 60, 66. 66 by 200. 100 2s are 200. 266, 33. Okay. 66 divided by 2 means 33%. Yeah. Yes, sir. Okay. Liver. सर इस टाइप के क्वेश्चन में स्क्रीन में सॉल्व करने में टाइम लगता है, वो मतलब एकदम सर एक एग्जैक्ट पूछना था स्क्रीन में ही तो सॉल्व करना है. सर. हाँ. सर ये जो क्वेश्चन था सर डायरेक्टली अगर टाई लाइन की हेल्प से अपन करें तो उसका आंसर 70 आता है, मतलब इफ वी फॉलो जनरल रूल. पर सर उसका आंसर 66.66 था. तो 70 सर कैसे आएगा? क्योंकि सर यहाँ पे आपका जो इनिशियल कंपोजिशन है सर वो एग्जैक्ट इस पे था, राइट? इट वाज एग्जैक्टली ऑन 70. सो इट वाज सपोज कि वो जीरो में ही आएगा उसका आंसर, मतलब लास्ट में जीरो ही रहेगा. बट सर फिर आंसर पॉइंट में क्यों आया? In the given TX diagram shows the olivine solid solution 1 bar pressure. Okay. So if P is in the initial position of the melt, the proportion of the melt at 1600 degrees Celsius. Okay. So first draw your trial line for 1600 degrees. It's red color. Okay. Okay. For 1600. Okay. तो यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं. ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है एक्चुअली. Okay. Now see. P जो है यहाँ. So this value is here and this value. Let's say मैं लेबल कर देता हूँ. Let's say A. Okay. Here it is D and here C. These 3 points. Here A, B, C. So now value of AB, this is 80, this is 70. Okay. 60, this is 50. So 70 minus 50. Okay. We'll get this value. 70 minus 50. 20. Okay. कहाँ की वैल्यू है ये? This is your 20. Okay. एल की वैल्यू. Now this value 50 and 40. Okay. So 50 minus 40. 10. सर 70 थी क्या कॉल अपन 50 कैसे आला? ये पानी थी. सी हाँ जो पॉइंट P दिया है ना, ये जो पॉइंट P है यहाँ से आपको कंसिडर करना सर है. ये सर P प्लीज जो दूसरा है फॉन्ट यूज कर. सर प्लीज दूसरा कलर यूज करता का तो ग्रीन विजिबल नहीं है नीट, तो वो घाण दिसता है. see this distance and this distance. This point P, okay, this point P is denoting fulcrum actually. Okay, या हम बोल सकते हैं point of separation. So now this portion is attached to, यहाँ पे melt है, so this is your liquidus. Okay, and this is your liquidus, and this is your solidus. Okay.
now the portion which is attached to the liquidus will define, क्या define करेगा ये? सर क्या? जो लिक्विड को मेल्ट अटैच है कंपोजिशन, जो लिक्विड Solid. से मेल्ट वो कंपोजिशन. सॉलिड है. Liquid. See, we are saying Yes, yes, solid you solution. told that it is always reverse. Yes, got it. Yes. Portion which is attached to the liquidus will show solid composition. तो यहाँ पे 10 है, it will give you solid proportion. Let's see. Okay, the portion which is attached to the solidus will give you the liquid proportion. This is your L or your liver rules. Okay, if you are calculating, क्या निकालना है? Melt proportion. Okay. So melt proportion means liquid proportion. So liquid proportion is L upon S plus L multiplied by 100. Clear? So L is 20. Okay. Then S is 10 and L is again 20. So 10 plus 20 multiplied by 100. Okay. You will get 200 divided by 3. Okay. So 200 divided by 3 means 66.66. Clear? तुमने क्या गलत किया? सब कुछ. सर आय जस्ट त्याला तिचा टच झाला तो लिक्विडस वरती, तिथून त्या टाय लाईनला इकडे नेलं, ॲज इट इज अशी टाय लाईन फॉलो केली आणि जे आलं पर्सेंटेज ते लिहून टाकलं. सी इग्नियस पेट्रोलॉजी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. तो इग्नियस पे सॉलिड और मेल्ट प्रोपोर्शन पे कोई भी क्वेश्चन है, ये 100% श्योर है कि वह लिवर रूल ही लगने वाला है. तो आप उसी डायरेक्शन में सोचो कि लिवर रूल कैसे अप्लाई होगा, बस तो आपको आंसर मिल ही जाएगा अगर आपने लिवर रूल को अच्छे से समझा है. सर लिक्विड अपॉन सॉलिड प्लस लिक्विड इनटू 100 हाच फॉर्मूला है ना. और लिक्विड अगर सॉलिड प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉलिड अपॉन सॉलिड प्लस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय 100. जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट वी नीड टू प्लेस इन द न्यूमरेटर. इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर सॉलिड प्रोपोर्शन तो यहाँ पे एस रखो एल की जगह. हमको यहाँ मेल्ट पूछा है. ओके, मेल्ट प्रोपोर्शन. सर आप वो जो बोले थे कि वो इनवर्स रहता है, वो क्या था? जो ब्लैक लाइन हाँ, वो रिप्रेजेंट दिस इज योर लिक्विडस. यहाँ पे मेल्ट है, इन दिस लाइन इज योर लिक्विडस. ओके, तो ये जो हमने पोर्शन निकाला जिसकी वैल्यू 10 निकाली, दिस पोर्शन इज अटैच्ड टू दी लिक्विडस. तो ये हमको सॉलिड के बारे में बताएगा. ओके, क्यों? इसके लिए आपको सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज को समझना पड़ेगा. भूल गए होंगे तो आई एम सॉरी, यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ओके, एक बार जो है सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है उसको रिवाइज करो. ठीक, सर सेम क्वेश्चन आला असता आणि जर आपल्याला दुसरं आलेच काढायचं आहे, असतं आलेच आहे असे क्वेश्चन येतातच. ठीक, तर होतं की होता क्या है जब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट के लिए लेट से, तो कंपोजिशन जो है हम ये टाई लाइन से निकालते हैं, इस पर मेजर करते हैं और आगे यहाँ से ऐसे लिक्विडस के थ्रू बढ़ेंगे तो फिर कंपोजिशन ऐसा जाएगा. आगे बढ़ेंगे तो कंपोजिशन ऐसा जाएगा. इस वजह से ये रिवर्स हो रहा है. सर जर सॉलिडच काढायचं असतं म्हणजे सॉलिड जर प्रपोर्शन काढायचं असतं तर मग कसं यूज करायचं सेम फॉर्म्युला? काय नाही, इथे फक्त एस घेतला. So हा instead जो of हा L, जो डिफरन्स होता तो Yes. ब्लॅक डॉट जो 10 घेतला आपण, मग तो नाही, ते लिक्विड सेमच साठी राहील, ते सगळं सेम राहिलं. इथे फक्त फॉर्म्युला चेंज झाला.
तो इंस्टेड ऑफ 20 यहाँ पे इफ यू नीड टू कैलकुलेट फॉर सॉलिड तो यहाँ पे हम 10 रखते 10/30 मल्टीप्लाइड बाय 100 बस इतना चाहिए। ओके सर। बाकी सबको समझा? Yes, sir. So out of 24 people or 23 people, 2-3 लोगों को डाउट आ रहे हैं, बाकी को डाउट नहीं आ रहे, मतलब क्लियर है सबको, या डाउट है भी तो भी जान दो, छोड़ दो, देख लेंगे, ऐसा वाला है। ओके, नहीं यहाँ पे एटलीस्ट फिर भी रहा तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, नाउ वेरिएंस, ओके, अनदर नेम फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं सिनोनिम्स। कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ असेंबलेज OPX, CPX, plagioclase, unblend fluid in the chemical system CaO, FeO, MgO, Al2O3, okay, plus H2O with the pressure and temperature as a physical variables. Okay, so one thing, pressure and temperature as a physical variable means two independent variables hai wahan pe, it is mentioned. Okay, so in that case we need to use a general phasor, E plus F is equal to C plus 2, clear? So ये फर्स्ट थिंग हमने नोट कर ली। सेकंड, नाउ फेजेस, ओके, जो मिनरल कंपोजिशंस है वो आपके फेजेस रहेंगे हमेशा, ध्यान में रखो। ओके, एंड ऑक्साइड्स जो है दे आर योर कंपोनेंट्स। ओके, सो कंपोनेंट्स काउंट करने हैं तो ऑक्साइड्स देखना, फेजेस काउंट करने हैं तो मिनरल देखना। ओके, so here we have OPX, orthopyroxene, clinopyroxene, plagioclase, unblend and fluid. Okay, so total 5 phases. So P5 plus F is equal to, now calculate the components CaO, FeO, MgO, Al2O3, H2O, 5 components. So 5 plus 2. Okay, so 5 get cancelled, F is equal to 2. Clear? Yes, sir. एक बार जब में ऐसे ही आया था। ओके Sir, but how can phases be 5? in general condition it is possible. See, जो हम स्टडी कर रहे थे, all these are laboratory conditions. Okay, so we are drawing different kind of triangular diagram. Okay, so जब आपने AFM diagram देखा था, so in that case we have seen more than 3 phases. AFM diagram में आपने कुछ देखा था diagrams को. Okay, they are like this. Okay, ऐसे कुछ phases. So let's say एक फेज यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, like this. General condition. सर जो भी आपने डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपेक्स पे होते हैं हमेशा, तो इसमें कंपोनेंट जो था वो ABC ही लेना था या ABCD E लेना था? 5 फेजेस वो साइड पे भी रहेंगे। नो सर, ये वाला नहीं, जो भी आपने ट्रायंगल ड्रॉ किए थे उसमें ABC था और फिर और भी थे, तो कंपोनेंट्स हमेशा सिर्फ अपेक्स पे ही होते हैं ना? मैं तो जब हम मोर देन 3 फेजेस की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे भी आए। सर वो दिया है क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने 5 फेज लिया ना। हाँ सर, सपोज ऐसा है तो ABCD को भी कंसिडर करेंगे ना हम एज अ कंपोनेंट? हाँ ये ओके सर, थैंक यू सर।
मैंने इस बार AFM डायग्राम भी पढ़ाई थी। ओके, पुराने वीडियो होंगे तो कोई देख लेंगे। यस इससे पहले AFM डायग्राम हम नहीं करते थे। अभी एग्जाम में हो क्या रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के चक्कर में वो डेप्थ में जाते जा रहे हैं एक। पहले टर्नरी पे हमें कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे। अभी क्या हो रहा है, टर्नरी सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर भी आया था, पहले नहीं पूछते थे बिल्कुल, पर अभी टर्नरी पर फेज रूल पे ही रख रहे हैं बेसिक लेवल। हो सकता है फिर भी बच्चे मार्क लेने लग गए तो थोड़ा और एडवांस या और डेप्थ में जाएंगे, तो इसलिए सारी चीजें थोड़ी पढ़नी ही पड़ेगी। आज न कल तो पढ़ना ही है। तो नेक्स्ट, लार्जोलेट genolith from the mantle contains 20% olivine, the rest being equal proportion of OPX, CPX. If the densities of the minerals are in kg per meter cube, olivine की दी है, OPX की है, क्लाइनोफेरस की है, the bulk density of the genolith in kg per meter cube is bulk density. Okay, very easy formula. Bulk means simple addition, ऐसा लेना. Okay, but in that case first percentage proportion is given. So here olivine किधर गया, 20% olivine and the rest. Okay, so let's say initially we always have 100%. Okay, so if 20% is olivine, means rest means 100 minus 20. Now we have rest is 80%. Now rest is being equal proportion of OPX and CPX. Now the rest means 80% is divided into OPX and CPX. Means your OPX is actually 40% and your CPX is also 40%. Clear? And olivine is 20%. So if the densities of mineral, now densities are given. First for olivine, okay, 20% means 20 divided by 100. Okay, so instead of writing this, I am writing 0.20. 20 by 100 means 0.20. Okay, multiplied by density of olivine, which is given 3220. Okay, plus bulk means addition, plus OPX. Proportion of OPX is 40%, of means 0.40. 40 by 100 means 0.40. Multiplied by density 3180. Plus again CPX percentage 40% means 0.40. Okay, multiplied by density of CPX 3330. Okay, multiply and add. 644 plus 1272 plus 1332 equal to 3248 kg per meter. Clear? yes sir. See, through this paper, I will touch each and every concept of numerical. Okay, आज तक जितना भी आया है या आगे आने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, हम सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर देंगे. ओके, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ओके, ट्राई टू सॉल्व बोथ द पेपर. ओके, तो मैं न्यूमेरिकल के पोर्शन को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ. आई एम अपलोडिंग दिस ऑन द यूट्यूब. तो आप एटलीस्ट न्यूमेरिकल सब दोनों के सॉल्व करो. ओके, तो जैम पीपल, आप क्या करो, जो सिलेबस मैंने उसको छोड़ देना, बाकी तो जो है वो तो कर सकते हो. सिर्फ जियो केमिस्ट्री को छोड़ दो, इंजीनियरिंग को छोड़ दो. सर यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना वीडियो? हाँ हाँ, कर, सिर्फ न्यूमेरिकल. यस सर. A mineral assemblage consists of pyrite,
ferrocylite and quartz in equilibrium, then the degree of freedom in the given system. Okay, so to solve such type of question, you should know the composition of ferrite क्या है Fe2SiO4. Okay, you can break this composition. Okay. FeO means FeO. Okay, so we have two FeO, so twice FeO and SiO2. Okay, so count two oxygen, total 4 oxygen, 1 silica, 2 iron. ठीक है, balance है. This is about ferrite. Now ferrocylite. Ferrocylite is equal to FeSiO3. Now again, only one iron means FeO. SiO2. Okay. So total 3 oxygen, 1 iron, 1 silver. Balance. Okay. And third thing is quartz. So quartz is only SiO2. Now from this, calculate FeO same. Okay. SiO2, SiO2. Means 2 oxide only. So from this we come to know that we have only 2 components. Clear? Clear? कैसे Yes, calculate? sir. Only 2 components because FeO है, SiO2 है और कुछ है ही नहीं. Component हमेशा हम ऑक्साइड के फॉर्म में कंसीडर करें. So we have only 2 components. Then the degree of freedom in the given system. Okay. Now F आपको calculate करना है. Okay. Now tell me P, number of phases. 3. Phases क्या होते हैं? Phases are nothing but your minerals. Okay, so we have ferrite, ferrocylite, and quartz. Okay, so 3 phases. Okay. Now no standard example, no any other condition is mentioned. So in that case, we use general phase rule. So P plus F is equal to C plus 2. Okay. So 3 phases, 1 component, calculate degree of freedom. Oh, sorry, 2 components. 2 plus 2. So 4 minus 3, 1. F is equal to 1. So you will get F is equal to 1 here. तो जैसे अभी एक ऊपर क्वेश्चन था ना, उसमें OPX, CPX ऐसे CaO वगैरह सब दिए थे कंपोनेंट्स वगैरह. तो अगर उसमें कोई फेज डबल रहता या फिर कोई कंपोनेंट डबल रहते जैसे CaO प्लस MgO प्लस CaO, तो हम सिर्फ CaO एंड MgO ऐसे ही कंसिडर करेंगे ना. एक ही बार कंसिडर. ओके सर, थैंक यू सर. Clear? यस सर. Answer 57. So according to the mineralogical phase rule, the number of minerals that can exist at equilibrium in a 8 component chemical system with 2 degree of freedom is 8. सब कुछ given है. Okay. 8 component chemical system. C is 8 with 2 degree of freedom. F is 2. बस मिस्टेक क्या होती है, फेज रूल कौन सा अप्लाई, कौन सा लगाना पड़ेगा, जनरल और रेड्यूस्ड. +2 मिनरोलॉजिकल फेज रूल दिया है. General, sir. General. Okay, so P plus F, so number of phases
the number of minerals that can coexist means पूछा क्या actually number of phases. Okay, so we need to calculate P, mineral that can coexist. So that is this is nothing but the phases. Okay, so P plus F है, C plus 2, C 8 है, 8 plus 2. Okay, मैंने F को शिफ्ट कर दिया, माइनस हो जाएगा with a degree of freedom 2. Okay, so 2 get cancelled. P is equal to 8. Clear? Sir, I have a doubt in 56th question. 56. Okay. Yes. In this question, equilibrium word is mentioned, right? They have mentioned equilibrium, which means P and T are applied here. Yeah. Then if P and T are applied, then we should use reduced phase rule. Repeat. Equilibrium means P and T are applied here, whether it's Yes. binary or binary. And then if P and T are given, if it's mentioned or we are considering P and T, we should apply reduced phase rule here, right? No. See, his general condition. We'll always consider this situation in equilibrium conditions only. Okay. Unless and until isobaric condition is mentioned. Okay. And in case of standard example, we already know that that conditions are already in the isobaric condition. Okay, in case of standard examples. Okay, and means we have studied all 6 type of binary system. Okay, then we have studied 8 types of ternary system. Fair enough. So except 14 systems, okay, you need to consider general phase rule everywhere. Okay. सर यहाँ पे मिनरोलॉजिकल फेज रूल लिखा है, उससे भी हम कंसिडर कर सकते थे ना कि जनरल फेज रूल ही यूज करेंगे. नहीं 56 में नहीं है ना ऐसा. नो सर 57. हाँ 57 में तो है. मिनरोलॉजिकल फेज रूल ये वर्ड से भी हम कर सकते थे ना कंसिडर कि जनरल ही लगेगा. Next, consider the schematic isobaric TX phase diagram in the binary forsterite and phthalate chemical system. If there is a equilibrium crystallization at melt L, the weight percentage of olivine crystallized from a melt of composition A at temperature T2. Excuse me, sir. Yes. Sir, if we don't know the formula somehow for this, sir, is it not possible that when it will touch the liquidus line, it will follow the path? Eventually, it will come at T2 point, and when it will reach T2 point, it will follow the tie line, and then I think the answer will be something around 70. That will be the final answer. So can't we apply this logic over here? See, in the solid solution, here we have coexistence of. Why we are getting solid solution? Because of the Diadochi principle. Okay, Diadochi. So we are having ionic substitution, and because of that we have variable composition. Okay, तो यहाँ पे हर point पे दो चीजों का coexistence. So if you see here inside this leaf, so we have forsteride and liquid. तो हमको कुछ तो सिस्टम चाहिए जिससे हम डिफाइन कर सके कि इतना फोर्स्टेराइड बन चुका है और इतना लिक्विड बचा है ना. और डायरेक्टली लाइन से ले जाएंगे तो वो तो हमको कोई एक चीज बताएगा, या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है. तो उसको डिराइव करने के लिए ही हमने ये मैथमेटिकल कंसेप्ट उसको अप्लाई किया. So at point, sorry, T2. Okay, so from A we have this point. Okay, point of separation. Then need to calculate at T2. So now calculate this distance and this distance.
Now weight percentage of olivine means solid. Okay, we need to calculate solid percentage. So solid percentage means the portion which is attached to the liquidus. So see, this is your liquid. Okay, so this is your liquidus. This line is your liquidus. Okay, the portion which is attached to the liquidus is here. This is okay. So now, if this is 20, this is 30. Okay, 30, and this is 40. So 30 to 60. This is 60 here. And in this point we have 30. Okay, so 60 minus 30. Okay, we'll get 30 for solid. For liquid 60. Here we have 70. So means 10. Okay, 70 minus 60 for liquid. Same formula आलेला. Formula is same. 70 minus 60. 10. Clear? So now for olivine means for solid. So solid proportion is equal to by Lever rule solid upon solid plus liquid multiplied by 100. So solid is 30 S plus L, 30 plus 10, 40. Okay, multiplied by 100. So 0, 0 get cancelled. 4, 25 is 100, and 25, 3 is 75. We'll get 75%. So meaning is at this particular tie line, okay, from this point to this point, okay, we have 75% solid and 25% melt. Clear? Yes, sir. Now consider isobaric ternary phase diagram ABC shown below. The diagram which is contoured with isophase of liquidus temperature in degree Celsius reveals crystallization. Okay, behavior of melt L of different composition during cooling. When a melt of composition A lies at the temperature of 1800 degrees Celsius, the variance of the magnetic system is. Okay, so now A is at 1700. Okay, but पूछा कब है? When it is at 1800, let's say below 1800 or at 1800. Okay, the condition is same. Okay, condition will change after 1800. Okay, so in this ternary system, okay, what is the actual path? If you remember, what is the path followed by this? Okay, so from this you will see the composition will move toward this line. Okay, then from this line you will see movement toward up to this peritectic point. Then after peritectic point you will see like this. No, sorry, it will end at peritectic. Okay, it will end at point M. If your initial bulk composition started from 1800 degrees Celsius. Okay, so here actually we have cotectic point somewhere here, let's say. Okay, it is not given in this diagram, but here we have cotectic. Then here we have peritectic.
But if your melt composition started from here, let's say from below 1500 degrees Celsius, so in that case, सर the एक छोटा path सा डाउट होता will है, छोटा miss सा the cotectic. It will go to this line and then towards peritectic. सर Yes. एक छोटा सा डाउट होता है, मे बी आउट ऑफ टॉपिक हो सकता है, पण स्पिनल वाला हीच डायग्राम होती का? Spinel composition. ओके सर. You will have spinel somewhere here. एक spinel का ऐसा field बन जाएगा. We have two conditions for this ternary system. Okay. One, if your initial melt composition started from 1800 degrees and below 1500 degrees Celsius. So if it is from 1500 degrees Celsius, वो इस पॉइंट को मिस कर देगा कोटेक्टिव. इट विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स एम और एम पे एंड हो जाएगा. ये लाइन पे जाएगा पहले, देन एम पे जाके खत्म हो जाएगा. इट विल गो टुवर्ड दिस कोटेक्टिक लाइन, यूटेक्टिक लाइन सॉरी, एंड एंड एट एम, यूटेक्टिक पॉइंट. सर एम तो पेरिटेक्टिक है ना? Sorry, this is eutectic. Here you have peritectic. Somewhere here, it is not defined. And this line is your eutectic line. This is eutectic line. This is another eutectic line. This is another eutectic line. Three binary. We have three binary system like this. Let's say one here, one here, और एक यहाँ पे, like this. So now, so initially, okay, so initially at 1800 degrees Celsius, क्या होगा? Only single phases exist. That is liquid. Here we have only liquid. Okay, so only liquid means क्या हो गया? We have P is equal to 1. Okay, only liquid at 1800 degrees Celsius. So P is equal to 1. यही सबसे important point है यहाँ. तो बेसिकली मैक्सिमम पीपल क्या करेंगे? C प्लस L को कंसिडर करके 2 ले लेंगे फेजेस और गलत कर देंगे. बट मेंशन किया है लाइज एट टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द रीजन. अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस ओनली लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट. उसके बाद वो क्रिस्टलाइज होगा. ओके, उससे पहले वो लिक्विड फेज में रहेगा. देन component ternary system है तो we have 3 component, no doubt. Okay, now you can easily calculate degree of freedom. So P plus 1 plus F, 3 plus 1. Okay, because standard example. Okay, reduce phase release करेंगे. 1 get cancelled, you will get F is equal to 3. लास्ट ईयर ही आया है ये जैम में. ओके, और इसी पे ऑब्जेक्टिव गेट में. Sir, then for any ternary system, we can expect that degree of freedom will always be 3. नो, हर जगह If it's not on that line and point thing, then we have different path of crystallization for every diagram. yes. तो हर जगह कंडीशन बदलेगी. Okay, sir. Sir, repeat again, sir. Yes, Repeat again, sir. see, at 1800 degrees Celsius only one phase is existed. Okay, what is the melting point of olivine? Hmm. 1809 maybe. 1892 actually. Okay, but we are considering the coexistence of 3 phases. Okay, so जो melting point है वो depress हो जाता है. Okay, so in this particular condition up to 1800 degrees Celsius वो liquid phase में रहेगा. But once it is, if temperature is below 1800 degrees Celsius, you will see the crystallization of C.
Okay, in standard example, you will see the crystallization of olivine actually, but here you will see the crystallization of C below 1800 degree Celsius. जब crystallization शुरू हो जाएगा, तो in that case you have two phases, one crystal and another one liquid. But up to 1800 degree Celsius or before 1800 degree Celsius, okay, up to 1800 or before 1800 degree Celsius, we have only liquid phase, means P is equal to 1. So P is equal to 1, and this is the example of ternary system. ABC is given, means component 3. Use reduced phase rule. You can calculate F is equal to 3. Like this. Okay, sir. Clear? Thank you. A melt-in binary system, MgO SiO2 contain 85% of SiO2 if all magnesium is consumed to form anstate, MgSiO3. Okay, how many moles of this mineral will crystallize to form 100 gram of melt? Now we are talking about 100 gram of melt. Okay, now here in this binary system of MgO SiO2, 85% is silica, let's say. Okay, so out of 100, if 85% is silica, so remaining 15% जो है वो क्या रहेगा? MgO. Okay, because 85% is silica, that is given, so we have only 15% MgO. Now they are saying if all magnesium is consumed to form anstate, means this entire 15% is consumed, और इसी का हमको anstate मिला. Clear? So how many moles of mineral will crystallize from 100 gram? Then how many moles? Okay, so number of moles means formula for number of moles, given mass upon molar mass. और थोड़ा सा केमिस्ट्री पता हो. Okay, so number of mole means given mass divided by molar mass. So molar mass is already given, MgO का. Clear? So given mass is 15%, let's say, divided by 40.3 molar mass. Calculate करो, number of moles आ जाएंगे 0.36. सर MgSiO3 में तो सिलिका भी है ना, फिर मुझे क्वेश्चन में अच्छे से नहीं समझा. सिलिका है ना, तो सर पूरा MgSiO3 के लिए पूछा है ना इधर. How many moles of this mineral? see if all, पर यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, all magnesium is consumed, इसीलिए हम MgO निकाल रहे हैं, MgO का कंसिडर कर रहे हैं. ओके, वी डोंट नो एंटायर सिलिका इज कंज्यूम्ड. हो सकता है कुछ सिलिका बचा हो एंस्टाटाइट बनने के बाद भी, but we are sure about this 15%, that all 15% is consumed, इसलिए. Okay. Finish. त्या क्वेश्चन मध्ये 100 ग्राम दिलं होतं तर त्याचा काही संबंध नाही. बरं ना, 100 मधूनच मायनस केलं ना आपण 85. 100 मायनस 85 किया. आणि तेच एस्टाइट पण होता. एन्स्टाटाइट बनायसाठीच ते वापरला गेला आहे. Okay.